हिफ्जा आप हैं इस वक्त? हिफ्जा, हिफ्जा वसीम। यस सर। हाँ, हिफ्जा जरा वो मैं तुमको को होस्ट बना रहा हूँ, अगर कोई स्टूडेंट आए उसको ऐड कर लेना, ठीक है? यस सर। हाँ, जरा वो तुमको को होस्ट बना रहा हूँ, अगर कोई स्टूडेंट आए तो ऐड कर। मैंने अभी आपको म्यूट कर दिया है। और सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू yet another गप शप। अच्छा, वेलकम टू yet another गप शप। अच्छा, इसमें मेरा ख्याल है मेरी आवाज़ जो है ना वो रिपीट हो रही है। और उसकी वजह वही है कि मुझे स्क्रीन शेयर के ऊपर अभी। जी एको आ रहा है मुझे तो। हाँ, तो एक काम करें, अभी शेयरिंग बंद कर दें, मैं फिर आपको शेयर दे दूंगा। हाँ, अच्छा ठीक है, अब देखें एको आ रहा है। एको आ रहा है मुझे तो। मुझ, मुझे तो एक एको नहीं मिनट आ जरा, रहा। एक मिनट, मैं समझ गया कहाँ से हो रहा है ये गड़बड़। जस्ट गिव मी वन। देखें एको आ रहा है। मुझ- मुझे तो एको नहीं आ रहा। एक मिनट, मैं समझ गया। बिस्मिल्लाह। चलें जनाब, हमने अपनी टेक्निकल डिफिकल्टीज ख़त्म कर दी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। अल्लाह ताला हम पे करम करे और हमको सेहत और तंदुरुस्ती की ज़िंदगी और ईमान के साथ ज़िंदगी अता फरमाए। तो आज हमारे साथ तारिक जाफरी साहब हैं, जो आज की गपशप में हमारे साथ शिरकत करेंगे। तारिक साहब का रेज्यूमे मैं देख रहा था, इट्स यानी कि वन ऑफ द बेस्ट आई हैव सीन फॉर अ वाइल, के इतना अकम्प्लिश किया है इन्होंने। अ, सबसे बड़ी की बात ये है कि जो हमारे यूएस के अंदर जो बड़ी लैब्स होती हैं, जो कि रिसर्च के अंदर बड़ी लैब्स कहलाती हैं, उनमें फर्मी लैब नंबर वन है। उसी के अंदर डॉक्टर तारिक साहब ने काम किया। उसके अलावा भी तीन और जगहों पे, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है, उसकी जो हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स और एक्सीलरेटर लेबॉर्ट्री है वो। और इसके अलावा भी एक और जो सुपर कंडक्टिंग सुपर कोलाइडर है, उसके अंदर भी डॉक्टर तारिक साहब ने काम किया है। इम्पॉर्टेंट बात ये नहीं है कि ये जो सफ़र होता है किसी का भी, वो कहाँ से शुरू हुआ। बेसिकली मेरे नज़दीक इम्पोर्टेंट बात ये हो कि डेस्टिनेशन जब इंसान के सामने होती है तो वो किस तरीके से अपने आप को लाइन अप करता है उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो तारिक साहब के जो वेरियस एक्सपर्टीज हैं, उसके अंदर ना सिर्फ ये कि वो इन लैब्स के अंदर उन्होंने मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, बल्कि जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसके साथ साथ जो इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंदर काम किया, और प्राइवेट इंडस्ट्रीज के अंदर भी काम किया, टेलीकॉम के अंदर खास तौर पे। तो हम चाहेंगे आज के इस गुफ्तगू का आगाज इस तरह हो कि तारिक साहब हमें बताएं कि वो उनकी जो जर्नी थी, उनकी जो ये
जो उन्होंने जर्नी स्टार्ट करी अपनी। और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर तारिक साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप ईस्ट पाकिस्तान से में थे, या आपके नहीं, नहीं? मैं वेस्ट पाकिस्तान में ही मैं आप वेस्ट पाकिस्तान में ही रहे। जी हाँ। अच्छा, मैं अभी किसी और से कंफ्यूज कर गया। इस उम्र में ये अपने साथ होने लगा है बहुत आजकल। तो लेकिन हम जब बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी दो तीन बहुत बड़े बड़े फिजिसिस्ट आए, और जो कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने बड़ा नाम किया। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज आपको तारिक साहब से मिलाए, और ख़ास तौर पे वो लोग जो हमारे अप्लाइड फिजिक्स के अंदर हैं, और जो हमारे साइंसेस के अंदर स्टूडेंट्स हैं, वो इनकी गुफ्तगू से देखें कि किस तरीके से इन्होंने अपनी जर्नी का आगाज किया, क्या क्या मुश्किलात इनको सामने आई, और हाउ ही कम आउट ऑफ दैट एंड बिकम व्हाट ही इज टुडे एज अ सक्सेसफुल फिजिसिस्ट। Tariq Saab, it's all up to you. Thank you again for joining us or supporting NED scholars. We really appreciate your help and support. जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सो आई थिंक जो फोरम है हमारा, तो इसमें उर्दू इंग्लिश मिक्स लगती है आई गेस। आप मुझे अपनी पसंद का मीडियम बता दें तो मैं वो ज़बान इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगा। नहीं, हम लोग दोनों तरह चलते हैं, हमारे लिए कोई फिक्स नहीं तो पहले तो है। ये कि इस गपशप को सेलिब्रेट करने के लिए मैंने अपनी स्पेशल शर्ट निकाली आज, और आप ये देख सकते हैं। एंजॉय करें, और फिर मैं आपको इसकी एक दो स्लाइड्स भी दिखाऊंगा और ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो आपको मेरी स्क्रीन पे ये नज़र आ रही है स्लाइड्स? फिर अभी नजर नहीं आई। बहुत। अब नज़र आ रही है कि नहीं? नहीं, नहीं, अभी नजर नहीं आई। आपने शेयर नहीं करा अभी। मैंने शेयर जो नहीं किया इसलिए नहीं आ रही। अब देखें। जी बिल्कुल। ओके, क्योंकि मेरे पास वो बॉर्डर आ जाता है रेड कलर का कि जो बताता है कि शेयर कर रहे हैं। तो एक क्विक सर्वे सा मैं करना चाह रहा था कि कितने प्योर साइंसेस के लोग यहाँ अटेंड कर रहे हैं और हम सब कितने कर दे दो। कंप्यूटर साइंसेस के लोग अटेंड कर रहे हैं। हम सब करें, अगर आप लोग साइंसेस के अंदर है, कंप्यूटर साइंस या बीएससी जो कर रहे हो, थम्स अप कर दें ताकि आसानी से हमको पता चल जाए। रिएक्शंस में थम्स अप, 1 2 3 4 5 4। अभी तक तो 4 आए हैं, सॉरी 5 भी नहीं। प्योर साइंसेस में चार हामिद। पांच हाँ हामिद, आप कहाँ हैं? हामिद भी तो होंगे, अभी नजर आए थे मुझे, सैयद हामिद हुसैन। हाँ, आपने हाथ नहीं उठाया हामिद हुसैन। आप तो फिजिक्स में ना सिर्फ फिजिक्स के अंदर बल्कि फिजिक्स में मास्टर्स भी कर लिया इन्होंने। तो और बाकी ऑडियंस हमारा जो है वो कंप्यूटर साइंस पे फोकस्ड है आई गेस, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग। और इंजीनियरिंग पे। तो चलें शुरू करते हैं इस स्लाइड से। जहाँ भी स्लाइड्स अगर आपको नज़र ना आए तो मुझे बता दें ताकि मैं इधर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो मैं उसको एड्रेस कर लूँ। तो NED स्कॉलर्स जर्नी ऑफ अ लाइफ टाइम, गपशप। अब आप लोग गपशप कर रहे हैं तो मैं भी गपशप थोड़ी सी करता हूँ आपके। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये जो दूसरी स्लाइड है, ये एक आर्टिस्ट का व्यू है जो कि अमेरिका की पहली पार्टिकल एक्सेलरेटर थी, जो जिसमें आप मैटर एंटी मैटर को कोलाइड करते हैं। और इसकी मैं आपको डेफिनेशन आगे चल के देता हूँ कि कोलाइड का मतलब क्या हुआ। तो बहरहाल ये लैब जो है वो 67-69 में ऑपरेशनल हो गई थी, और बॉब विल्सन जो है वो हमारे डायरेक्टर थे। जब ये लैब बनी थी, जो इतना इनको बजट दिया गया था, तो उसमें से कोई 120 मिलियन वगैरह बच गए थे पैसे। तो इन्होंने
डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी को वापस कर दिए कि जी हमारा काम हो गया, अब हमें मज़ीद पैसों की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन ऐसी एग्जांपल्स अब नहीं मिलती हैं हमें। तो मैं आपको हाई एनर्जी फिज़िक्स, हैप लैब्स, सुहेल साहब ने जिक्र किया, जहाँ जहाँ भी मैं गया हूँ मेरे सफ़र मुझे ले गया है। पार्टिकल एक्सेलरेटर्स का थोड़ा सा जिक्र करूँगा, आपको काफ़ी सारी स्लाइड्स दिखाऊँगा और आपको छोटे छोटे 2-2 मिनट के स्निपेट्स दिखाऊँगा टू डिफाइन एक्सेलरेटर डिज़ाइन। मेरे एक दोस्त हैं डॉन लिंकन, मेरे पुराने फर्मी लैब के, मेरे बाद उन्होंने ज्वाइन की थी लेकिन वो अभी भी वही हैं, और उनकी डेफिनेशन और उनकी जो आर्टिकुलेशन है वो बहुत इम्प्रेसिव है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनको ही उनकी वीडियोस वगैरह आपसे शेयर करूं, और मैं आपको फिर उसके लिंक्स भी भेज दूंगा इंशाल्लाह। अगर आपको सूरह इंसान में है, हल अता अलल इंसान हीना अलल इंसान हीनम मिन अद-दहर लम यकुन शय्यन मज़कूरा, कि इज देयर नॉट अ पीरियड ऑफ टाइम जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज़ ईच ह्यूमन इज नथिंग येट वर्थ मेंशनिंग। और फिर दूसरी आयत में है इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाज नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा, that we alone, meaning Allah subhanahu wa ta'ala, created humans from a drop of mixed fluids in order to test them, so we made them hear and see. ये hear and see और test them, और कब बनाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को, एस्टिमेशन है कि इंसान दुनिया में अबाउट 500,000 ईयर्स से रह रहे हैं, 300,000 से 500,000, अगेन बेस्ड ऑन कार्बन डेटिंग एंड ऑल दैट स्टफ, जब से भी हैं। लेकिन the universe itself is about 15 billion years old. Earth itself is about 5 billion, 4.5, 4.25, up to 5 billion की estimation है। तो इतने अरसे से अगर ये अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाई है तो इसे आबाद क्यों नहीं किया? आबाद इसलिए नहीं किया कि ये उस वक्त मोल्टन मेटल था, और हर वक्त जो है वो इसका टेम्परेचर इस दर्जे का था कि यहाँ पे कोई चीज़ रह नहीं सकती थी। कोई ज़ीरो तो बात की चीज़ है, कोई चीज़ उग नहीं सकती थी, रह नहीं सकती थी। आप इस चीज़ का अंदाज़ा इस तरह लगा लें कि सन का जो टेम्परेचर है वो अबाउट 14 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है और 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट, और आस्ता आस्ता सन इज़ कूलिंग डाउन। वही हाल ज़मीन का था, वही हाल दूसरे प्लैनेट्स का था, और आस्ता आस्ता दे कूल डाउन, और अब जो है वो ज़मीन का टेम्परेचर इतना है कि ये लाइफ सस्टेन कर सकता है। अब जब लाइफ सस्टेन कर सकता है तो इंसान जो है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि टू टेस्ट एंड टू बेसिकली ponder on what his creations are all about, that's where the journey starts. और पार्टिकल, and I'm moving really jumping fast forward, तो पार्टिकल एक्सेलरेटर या पार्टिकल साइक्लोट्रॉन्स या linear accelerators, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं और हर एक का अपना अपना फंक्शन है। जो just to give you a sense of कि मॉलिक्यूल हम सारे जानते हैं, एटम हमें पता है उसके अंदर प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस हमें पता है उसके अंदर ये सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन एटम जो है वो बनता किस चीज़ से है? उसे क्वार्क्स कहते हैं। तो लाइफ यहाँ से शुरू होती है। नॉट टू मैनी पीपल वुड नो अबाउट क्वार्क्स, और इवन इफ दे डू, they don't know how it really plays a role in what you have here, molecule. मेडिकल साइंसेज जो है वो इस लेवल पे काम करती है एट मोस्ट। फिजिक्स या साइंस, केमिस्ट्री, biology, even biology talks about electron transfers, लेकिन they go back to molecules immediately. Atoms जो हैं वो that's important, कि यहीं पे सारी चीज़ों का फोकस होता है, to the extent कि nuclear engineering, nuclear physics talks about nucleus and then straight away goes to atom.
It's only in physics, high energy physics in particular, that you talk about quarks. Life इंसान की ज़्यादातर यहाँ से एटम से शुरू होती है और it goes in this direction, not in this direction. High energy physics has a habit of going in this backward direction to see what is, what was, what it is today, what it used to be yesterday. And that's where Allah subhanahu wa ta'ala's message comes in कि हमने तो तुम्हें जब भी बनाया हमारे हमारे ईमान के मुताबिक, it takes about 120 days for a child, for fetus to जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें रूह फूंकते हैं. तो ये तो इंसान का जो है वो creation happened much later than Allah subhanahu wa ta'ala ने ये कायनात बनाई. And carbon dating and other sciences have proven that, or beyond shadow of a doubt कि ये ज़मीन sustain ही नहीं कर सकती थी. Just to give you a sense of कि it's very important to understand कि हर चीज़ का size दुनिया में क्या है. अगर हम जिस तरह कहते हैं ये आदमी लंबा आदमी है, what do we mean by लंबा आदमी? अगर किसी की average height, I'll give you example of Japan. Japan में average height was 5 feet or so. उनके दरवाजे जो होते थे they were 70 inches, 72 inches at most, जिस तरह Home Depot और Lowe's में. और after 69 and 70 उनके दरवाजे जो standard था, that became 7.5 feet, और उनकी average height had already gone up by 4 to 5 inches. So it's all frame of reference. The frame of reference establish करने के लिए I thought to share this infographics. जो virus होता है उसका size है 10 to the minus 7 meters, बहुत ही small. Molecule is 10 to the minus 9. Atom is minus 10 to the minus 10 meters. और nucleus is 10 to the minus 14 meters. अब उससे keeping in mind जो पिछली slide थी, proton पे आप आ जाएं तो इसकी measurement हुई थी 1970s में, 10 to the minus 15 meters इसका size है. और quark जो कि 1980s में इसकी discovery शुरू हो गई थी, तो it was 10 to the about roughly 10 to the minus 18 meters. This is the size. So what is next beyond quark? Like I said, high energy physics has a habit of looking backwards, looking back in time. अब इससे पीछे अब क्या कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, क्या मिलेगा, we don't know yet. We are still working on it, right, in sciences. Lekin eventually all these things lead us to Big Bang, which is about close to 14.5 and 15 billion years old. शायद उसी मौके पे अल्लाह ताला ने कहा कुन फयकून and then everything happened. वल्लाह आलम. There are 4 forces in nature जो हमें समझ आती है: strong force, electromagnetic force, weak electromagnetic force, and gravitation force. Dr. Abdul Salam Pakistan he worked on electromagnetic force and weak force, combination of these two forces. और वो high energy physics of course, him and Glesha, they received Nobel Prize. So I'm going to stop there talking about the physics part of it. तो ये सब करने के लिए how do you do that? And what is it that allows you to look back in time and measure this quark, measure the size of the proton and beyond? उसके लिए we use something called particle accelerator. So what is particle accelerator and how do they work and why are they important to us? तो अब अगर आप इजाज़त दें तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो को देखें जो कि Don Lincoln, an old friend of mine from Auto insurance all seems the same until it's time to use it. With USAA, it's easy to file claims. so Imagine that you're an automobile engineer that builds cars. The most recent car you made. तारिक साहब वो आपको अपना स्क्रीन चेंज करना होगा ताकि हम YouTube वाला जो विंडो है वो देख सकें. सही कहा आपने, मैं उसको करने लगा था. So share this here.
और ये अब नजर आए आपको? जी जनाब। ओके, तो ये 5 मिनट लंबी है, लेकिन मैं इसका थोड़े से स्निपेट्स दिखाऊंगा आपको, लेस देन 5 मिनट्स डेफिनेटली। Let's call it the cool car. Broke the world record as the fastest car in history. However, a year later, an automobile manufacturer made a new remote-controlled vehicle called the Wonder Car, which bested your car's top speed. It's only natural that you would want to see what unique parts the Wonder Car used and how it's built differently from your cool car. The problem is, the Wonder Car is put together using special proprietary tools that you can't access. So, given that you are unconventionally adventurous, you buy 2 Wonder Cars and put them on a racetrack in opposite directions so that they travel towards each other. Using their remote controls, you accelerate both cars to their top speeds, which is when you make them crash into each other. There's a deafening bang, and the internal parts of both Wonder Cars fly out in every direction. That is the basic working principle of the world's largest particle accelerator. In the most basic terms, a particle accelerator is a machine that accelerates particles. More specifically, it accelerates elementary particles, like protons and electrons, at extremely high speeds, almost 99.99% the speed of light. These particles are then smashed against a stationary target or against other particles traveling in the opposite direction. These collisions produce massive particles, such as the top quark or the Higgs boson, which last for only a fraction of a second. Then, almost immediately, these particles convert into smaller, lighter particles, which, in turn, decay almost instantly. These collisions not only help us understand the composition of the elementary particles in question, but also supplement our knowledge of our universe's origin immediately following the Big Bang. Particle accelerators can be broadly classified into 2 categories: linear accelerators, also called LINACs, and circular accelerators. A linear accelerator accelerates ions or subatomic particles to a very high speed using a strong electric field along a linear path, hence the name linear accelerators. A circular accelerator, in contrast, accelerates elementary particles along a circular path to finally smash into a target or other incoming particles from the opposite direction. The largest circular accelerator in the world is called the Large Hadron Collider, or LHC, which is located at CERN near the French-Swiss border. The circumference of the accelerator is nearly 17 miles or 27 kilometers, greater than the length of Manhattan. Circular particle accelerators are sometimes also referred to as atom smashers, as they smash subatomic particles into each other. The basic working principle of all particle accelerators remains the same. They contain a particle source that provides elementary particles. Although a particle accelerator commonly accelerates protons or electrons, it can also accelerate other particles. The LHC, for example, can accelerate the nuclei of argon, xenon, or lead atoms. This beam of elementary particles travels inside a metal beam pipe, which maintains a vacuum inside. It is critical to ensure that the whole beam setup is devoid of air and dust particles, so that accelerated particles can travel unimpeded and achieve speeds close to the speed of light. There is special equipment placed around the accelerator that produces strong electric fields. It is these electric fields that allow the particle to achieve such high speeds. They switch from positive to negative at a given frequency, creating radio waves that push and accelerate particles. There are also numerous electromagnets placed along the length of the accelerator. Their primary job is to focus the beam of particles as they accelerate and keep them locked in a circular path within the metal beam. As the particle races extremely fast around the accelerator, it gains more and more energy with each turn. In the LHC, for example, accelerated protons attain the energy of 6.5 trillion electron volts. This is the highest magnitude of energy reached by the accelerator. And when protons carrying this much energy collide with other protons, the energy of those collisions is transformed into matter, following Einstein's energy-mass equivalence equation, which states that mass and energy are interchangeable, since matter is just a concentrated form of energy. This is why particles like the Higgs boson are produced by these collisions. Studying their properties provides us with insight into the composition of matter and the universe's origins. Contrary to popular belief, particle accelerators are not all highly complicated machines that only exist in huge laboratories or movies. A particle accelerator can be as small as a few inches across. In fact, the first accelerator ever built was less than 5 inches across. There are currently more than 30,000 particle accelerators in the world.
Although they're often associated with particle research and understanding our universe's origins, accelerators are also used in medicinal sciences. Millions of patients around the world are diagnosed using medical appliances that are essentially particle accelerators. Linear accelerators can generate X-rays and high-energy electrons, which can be used in medical diagnostics and radiation therapy for cancer patients. Furthermore, accelerators are also used in ion implantation to manufacture semiconductors. The process is critical to introduce a specific type of ion at a desired depth to create semiconductors. Hundreds of industrial processes involve accelerators, ranging from manufacturing computer chips that power our computers to the sterilization of culinary processed food items that can be stored at room temperature for months. Although you shouldn't smash Interesting. Okay, so hopefully आपने वो वीडियो देखी पूरी. जी जी. About 5 minutes मैंने कहा था, 5 minutes is what I used. Hopefully that sets up the stage के have a general idea कि particle accelerator होते क्या हैं and what we do with that. Particularly मैंने एक project पे काम किया जिसमें Texas A&M में grain आते हैं और उनके linear accelerator से आप उसको irradiate करते हैं. And the purpose is कि आप उसके अंदर फंगस वगैरह ना लगे and then तो GMO तो नहीं है वो necessarily, लेकिन it is irradiated, so it has been touched by ions to remove that and make it safe for human consumption. और इसी तरह से जो seeds वगैरह जो seed banks हैं, दुनिया के जो सबसे बड़ा seed bank है वो that's in Svalbard, Norway. I think something like I don't know, मुझे याद नहीं उसका latitude, but it's the furthest furthest most northern town city that is habited right now. तो वहाँ पे seed walls हैं और उन सारों को irradiate करके तो preserve किया गया है ताकि God forbid something happens in any eventuality, उन seeds को आप use कर सकते हैं to grow your crops and stuff. Okay, अब आपको मेरी slides फिर से नजर आ रही हैं, hopefully. हाँ बिल्कुल नजर आ रही है सर. Okay, चलिए. जो quarks की बात की है, this is what the map looks like. Quarks जो हैं वो इनकी categories हैं और अभी तक जो है वो 12 quarks जो हैं वो discover हुए हैं और like I said, its size is 10 to the minus 18 meters, which is very, very small. Let's jump into superconductivity. तो सुपरकंडक्टर्स का भी मैं आपको थोड़ा सा ही दिखाऊंगा. ये काफ़ी इसकी 8 मिनट की वीडियो है, लेकिन he does a very basic elaborates the basic concept of superconductors and its applications in daily life. लेकिन उसको मैं pieces में दिखाऊंगा आपको. उसके बाद दूसरा जो है वो properties of superconductors पे मैं तकरीबन 3 मिनट की ये है और then we can see what it is. So अगर आपके सवालात वगैरह हों particle accelerators पे तो please do that जब ये हम complete कर लें superconductors का, and then I'll try to answer that और उसकी details के लिए I will definitely provide you the links inshallah. So ready for the second one, I suppose? Sure, go ahead please. I haven't been able to take my eyes off my husband's pants since he tried this morning trick. What happened afterward was unbelievable. Hey, you ever wonder about superconductivity? With possibly one of the most important scientific breakthroughs of the 21st century. It was claimed to herald a monumental breakthrough. Some are calling it the holy grail of chips, a superconductor.
might have heard about conducting materials. Metal is a commonly used conductor. Copper is relatively inexpensive. It's bendable, so you can make wires out of it. So this is Neil deGrasse. I think everybody knows the him. Copper, and it carries electricity. But you need a force to make that happen. You need a voltage that will drive a current. Okay. So as the electrons move through the medium, because it doesn't have to be copper, it could be gold. Gold is a nice conductor of electricity. If it conducts, as the electron moves, it gets resistance from the material itself. And that resistance slows down the current. If it eats it, what does it then do with it? It heats up the wire gets hot. So for many circuits, if you feel the wires after a time, they feel warm. This is electrical resistance to the movement of those electrons. Sometimes you want resistance, and we've made electrical components called resistors. This enables you to change the current from one place to another, because not all current is useful in all places. So circuit boards have all manner of circuit components, and it includes resistors for just this purpose. For some materials, there exists a temperature below which, and it happens abruptly, a temperature cold enough that below that temperature, all resistance drops to zero. You could take away the battery that's driving a voltage, and whatever current was there will stay in the wire forever with no loss of current. That is superconductivity. So superconductivity is something you would want driving an electrical grid with no loss of current. There's lost current moving electricity from one place to another. And so if you could embed the entire electrical system in a very cold vat of liquid nitrogen, and you made all of your wires out of a material that would go superconducting at the temperature of liquid nitrogen, we would have no current losses anywhere. But who wants to live in liquid nitrogen? Okay. Liquid, at what temperature? It's 70 degrees Kelvin. All right. If you dipped a banana in liquid nitrogen and pulled it out a minute later, and you could hit it with a hammer, it'll shatter. By the way, those would be high temperature superconductors. At that cold temperature, those are high temperature, because most of the traditional superconductors don't go superconducting until they're down around 10 degrees Kelvin, 5 degrees Kelvin, 3 degrees Kelvin. Okay? And that's cold. No, you can't walk around with something that's 4 degrees Kelvin. Oh, by the way, officially, we don't use the term degree referring to Kelvin. It's just 4 kelvins. But I'm reminding you that they are temperatures. So why is that cold? Because 0 Kelvin is the coldest possible temperature you can get. It's the absolute temperature scale. 0 on the absolute scale has no negative temperatures, right? That is the coldest you can possibly be. So there's a hunt for a room temperature superconductor. The problem is many of them are made of ceramic, the ones that are approaching room temperature. In ceramic, it tends to be So you all saw Neil deGrasse's video on superconductors and very basic functions of that. Temperature is of course very important. उन्होंने liquid nitrogen की बात की, which is 70 degrees. Okay. लेकिन जो particle accelerators में cryogenic temperature होता है, that's about
2.2 degrees Kelvin to 4 Kelvin पे operate करते हैं. Once you go below 2.2, which is 1.8, considered to be absolute zero. Anything below 1.8 is considered absolutely zero. However, superconductors and kite goes, resistance goes down to zero, but that is not exactly the case. Even at that temperature, 1.8 degrees Kelvin, there's a residual resistance that I just happen to have done some work on that. जब मैं KEK में था, so I did some studies on that, and we published a paper on that as well. Triple R, as we call it. So, so what we are looking for is nearly absolute. At nearly absolute zero, you have a nearly zero resistance. So, but then that's physics. For general knowledge, yes, that's absolute zero, and that's absolute zero resistance, so to speak. एक दो सवाल ले लें सर? Yeah, please. तो एक सवाल ये है कि does something actually exist beneath the quarks yet or not? That question remains to be answered. इसीलिए उस slide में मैंने question mark लगाया था below 10 to the minus 18 meters of size, if you will. That's the size of the quark. What happens is कि जब quarks के level पे आप पहुंचते हैं, in other words, you take your particle accelerator and you smash two particles, and there's a huge interaction region which then looks like this. And this tells you, the colors tell you different types of particles and different energy level of different particles when they collide with each other. So you actually, what we call it is a shower, literally shower. So imagine marble, glass marble, you take a big sledgehammer and you hit on it and it shatters. We just don't know where it went. And we don't know the size of different shattered pieces. That is the state that you are in when we say this is, you're looking at the particle showers. And it happens in bunches. And each bunch of particle, it has about 1 trillion particles in it, trillion protons in it. And then that collides with antiproton, another trillion antiprotons. So you can imagine, so this is really a controlled nuclear explosion that we conduct. और उसके लिए safeguards होते हैं and all that kind of things. And that's what my particle detector, that was part of my thesis project. That's what it did. That it would measure the energy of these particles, particularly particles that were part of the weak forces. And जो कि Dr. Salam की theory and Glashow की theory says that weak and strong forces are really one force. So the struggle for physicists is to combine them all, and GUT, grand unified theory. As we said, it takes guts to prove gut. So that's the struggle. इसी के सिलसिले में एक और बात जो हम देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, मैं इतना ज़्यादा तो पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन अगर आप देखें ना तो हिग्स बोसॉन जो है वो 2012 आई थिंक उस वक्त आया था। Higgs, yeah. 2012 के बाद से हमने कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं देखा अभी तक। और अगर आप पार्टिकल्स की भी बात कर रहे हैं तो जितनी भी दफ़ा कोलाइडर से बातें आई हैं तो एक नया पार्टिकल निकला है, लेकिन उसको भी वो जो आपके स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर हमने फिट करने की कोशिश करी है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये
can there be some other method also to go into and find out what was happening at the time of Big Bang? Is there any other theory that is there जो कि जी, उसको नहीं, हम बहुत research सारे, you're right, बहुत सारे मॉडल्स हैं जो कि theoretical लेवल पे हैं, लेकिन the other source of this information um, is actually sending out the probes. Voyager, for example, is a good example. It has already crossed, I think, close to 14 billion miles or so. So आप probes भेजते रहें, and then hopefully you will find something. There's a project to scan the sky that was also launched at Fermilab in 2000s. तो इस किस्म के projects चलते रहते हैं, लेकिन जो established method है इस वक्त वो particle accelerator के through है, और जो LHC है इसको upgrade करके they will make it a 62 kilometers in circumference accelerator. तो उसके लिए वो फंडिंग वगैरह जमा कर रहे हैं. Studies are fairly on their way. तो any other comment or question? इसमें एक और जो है वो ये बात आती है कि जो जैसे CERN वाला जो है तो वो तो लार्जेस्ट है इस वक्त हमारे पास. तो मुझे तो कुछ मालूम है कि कुछ पाकिस्तानी फिजिसिस्ट भी वहाँ पे जाके रिसर्च में हिस्सा लेते हैं. आपके नज़दीक कोई आपको मालूम है कि उसमें कोई पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के थ्रू गए हों वहाँ पे? तो पाकिस्तान का नाम तो नहीं है as such in any collaboration, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के साथ आपकी अपनी अगर एसोसिएशन है तो you can join their experiment, you can use the data that they collect. पाकिस्तान कोई हार्डवेयर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, इंडिया कर रहा है, ताइवान कर रहा है, और बहुत सारे दूसरे मुल्क हैं, लेकिन पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग काम उधर बहुत कर रहे हैं, बट दे माइट बी यूरोपियन और अमेरिकन. और जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज के लोग हैं they only get the data to analyze, and I know of several cases जहाँ पे लोग डेटा लेते हैं and then they sit on it, they never respond. तो बेसिकली कोलैबोरेशन में आपका कहने को तो है कि हाँ I'm working on this, I'm working on that, but if you don't produce results, if you don't share that with the larger team, तो basically it's a moot effort. पाकिस्तान में टिपिकली जो मैंने देखा है पिछले 15-20 सालों में, वहाँ पे ट्रेंड ये रहा है कि आपकी कितनी पब्लिकेशन हुई है, बेस्ड ऑन दैट यू विल बी प्रोमोटेड टू द नेक्स्ट लेवल. यूनिवर्सिटीज़ में यही है, और गवर्नमेंट सर्विस में भी यही है. I'll give you a good example, and don't I hate to do this thing, लेकिन it's such a well-known fact कि अताउर रहमान साहब जो थे, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे, आई बिलीव, उनके जो साल में 4-5 पेपर छप रहे हैं, उसमें 4-5 पेपर में उनका प्रिंसिपल पीआई के तौर पे नाम है. द फैक्ट इज कि फॉर अ पेपर टू बी ओरिजिनल, you cannot produce 4 original research in any area in a year while you're still holding a position like that. तो अगर आप उनको देखें तो हर चीज़ में उनका नाम आ जाता है, लेकिन उनकी अपनी रिसर्च ज़ाती तौर पे उन्होंने उसमें कितना कंट्रीब्यूट किया है, अल्लाह आलम. But looking at it remotely, and people who are associated with research of any kind, they know it's just not right. तो ये तो ट्रेंड है वहाँ पे, तो मुश्किल हो जाती है. आई नो ऑफ हूद भाई को जानते हैं आप? हूद भाई की जो करंट वाइफ हैं, आई मेट हर इन अ कॉन्फ्रेंस इन किदाक्यूशू 95-96 में, समथिंग लाइक दैट. आई हेल्प देम विद, वो लिक्विड नाइट्रोजन पे काम कर रहे थे, तो उनको सेंसर्स चाहिए थे. मेरे पास लैब में, मैं उससे के में था, मेरे पास लैब में सेंसर्स वगैरह थे, वी वुड मेक देम. तो
जो उन्होंने प्रॉब्लम्स वगैरह बताई वहाँ पे इतनी फंडामेंटल है कि दे रिसर्च इज़ नॉट सपोर्टेड प्रॉपरली। तो उनको मैंने जितनी हेल्प कर सकते थे किया, उनको गेव देम 2 strings ऑफ cryogenic sensors, लेकिन and they were worth over 60-70 grand US dollars. Um, लेकिन I did not see much coming out of that place. So it's just very difficult कि आप environment जब तक आप culture नहीं create करेंगे, it's a little bit. नहीं, वो बिल्कुल आपने सही कहा। और अगर आप परवेज साहब की गुफ्तगू सुने तो वो इवेंचुअलिटी उसकी इसी पे ही होती है कि वो कल्चर नहीं है हम, और जिस तरह आपने बयान किया ना कि वो प्रॉब्लम तो रहती है। अच्छा, एक दो तीन सवाल आए। ये एक सवाल ये है कि डूइंग विच फील्ड मेडिकल फील्ड इज बेटर फॉर द फिजिसिस्ट, जो फिजिक्स पढ़ के निकलते हैं बच्चे हमारे यहाँ, वो एक तो रेडियोग्राफी की तरफ जा रहे हैं या मेडिकल फिजिक्स की तरफ जा रहे हैं। एक तो सवाल ये आया है। एक और सवाल है लेकिन वो बहुत फंडामेंटल है मेरे नज़दीक, और अगर आप उसका वो सवाल ये कर रहे हैं नूर के कि what creates gravitational forces? Now, Say if the that force is again. produced due to the mass, how come it is possible that thing that is created by the mass and is also act upon it? So gravitational force is a very controversial force. It's in fact it's not even considered a force in that sense. So iski long and short of it is that it's the mutual attraction that matters between two masses. So there is only one formula that depends on this the inverse relationship of the square of the distance, and then the mass product of two masses, and that's how gravitational force uh, between the two bodies would be defined. तो इसको देखने के बहुत सारे तरीके हैं, but it's in physics it's not even considered a force because it's so negligible that it does not really affect that. Uh, However, if you look at sun, I think it's close to uh, sun का जो outer temperature है, it's about 10,000 degrees centigrade. As opposed to center being 14 million degrees centigrade. So just like the temperature gradient changes, so does the pull from one mass on the other mass. So it's an interesting topic, and I'll try to find um, some fundamental approaches to gravitational forces, and I will definitely share the link with you. And it's always very intriguing for people in the field to work, and they totally ignore it when you are actually doing the math. देखिए, जब अगर आप जो जो आइंस्टाइन की थ्योरी को पे जाके देखते हैं ग्रेविटी को, जब ये ही डिफाइंस है कि वो जो रिपलिंग इफेक्ट होता है मासेस का, खास तौर पे जो हमारे जो जो प्लैनेट्स जब मूव कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू सन, तो उससे जो एक वेव क्रिएट हो रही होती है, वहीं से वो जो कॉन्सेप्ट जो बाद में आया है, जो आजकल भी बहुत हॉट चल रहा है टॉपिक ऑफ डिस्कशन, डार्क मैटर। और इनके बनाने का मकसद ये है कि कई थ्योरीज ऐसी आई हैं पिछले 50 साल के अंदर जो जिसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस तो बहुत हुई हैं और वो फेल भी बहुत हुई हैं, यानी कि उनकी एप्लीकेशन नहीं आई इतनी। यानी कि जब अप्लाइड फिजिक्स ने उस थ्योरी को रियलिटी पे लाने की कोशिश करी तो आंसर जीरो आया, और वो तो मूव नहीं हो पाई कोई भी चीज। हाँ, वो सारी वो गेम सारी ये कि देखे ना, physics या science, particularly physics, um, you need a language to express what you're saying or what you want to say. उसके लिए मैथ बड़ी कॉम्प्लेक्स होती जाती है। तो जब जब मैथ इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि एक्सपेरिमेंटल physicists are unable to design a machine, which is what I did, by the way. Accelerator physics, I went to for 2 years. I went to a particle accelerator school.
और वहाँ पे मैग्नेट डिज़ाइन करना, मशीन डिज़ाइन करना जो है वो दैट्स व्हाट दे टॉट अस। तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आपके जो आइडियाज़ हैं वो इतनी कॉम्प्लेक्स मैथ इन्वॉल्व है उसमें कि appropriate devices cannot be developed, or we have failed to develop those to satisfy your math, if you will. So it's always kind of a, you know, catch me if you can kind of a situation. वो theories propose करते हैं, either scientists and engineers work on it, and then something happens, and then you move to another one and another one. हैरानकुन बात यह है कि जो मेजर मेजर सक्सेस हुआ है हमारे पास, वो आइंस्टाइन भाई के पास से कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ आप नहीं देखें हुआ, सही न्यूटोनियन है, everything is है। Newtonian. अच्छा, So तो एक ये जो स्टूडेंट था, ये जिन्होंने अभी फिजिक्स में मास्टर्स करा है, इनका सवाल था वो कि आप क्या समझते हैं कि कौन सी फील्ड जो है इन हाँ, फिजिक्स के लिए ज्यादा बेहतर है तो पाकिस्तान के लिहाज से? हाँ हाँ नहीं, मेडिकल फिजिक्स जो है वो इज़ वेरी रिच। एक ज़माना था कि सिर्फ you could think of becoming a radiology expert and MRI expert. तो by the way MRI magnets जो हैं वो जो बने हैं तो वो they are an offshoot or spin-off of what we developed at Fermi National Lab in 80s, early 80s. Niobium Tesla, 6.9, 6.8 टेस्ला तक हम लोग उसे ले गए थे। उसके बाद मैं associated था उस project से, and then we designed magnets that we pushed it to 9.8 Tesla. और MRI magnets typically stay between 0.5 and 3 Tesla. और उनका साइज कभी ह्यूज होता था, अब रिड्यूस कर दिया गया है। तो नाउ यू कैन सी अ डोनट जिसके अंदर आप लेट सकते हैं। पहले जो वो इतना टाइट होता था, जो उसका एपर्चर था, कि क्लॉस्ट्रोफोबिक लोग तो उसके अंदर जा ही नहीं सकते थे। सो दैट्स द एरिया दैट्स स्टिल बीइंग डेवलप्ड। तो वो तो एक एरिया है। दूसरा जो है वो इंस्ट्रूमेंटेशन है। आप जितने भी हॉस्पिटल में देखते हैं instruments to measure any and everything, you a physicist is just the appropriate person with engineering background or instrumentation background to design and develop those equipments. और इस तरह यूनिवर्सिटी साउथ वेस्टर्न हॉस्पिटल है यहाँ पे डैलस में, और उनका बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है जिसके अंदर दे हैव क्लोज टू 50 to 100 students at any given day, and they are researching and working on developing instrumentation and other devices. And physicists are just the right people to work on those things. एक और बात, अगर आप इस पे भी कुछ हम वो करें कि हम आपने बहुत अच्छी आयत से स्टार्ट किया था, और उसमें जो जो बात हमें हमेशा एज अ मुस्लिम टॉन्ट करती है, वो ये कि हमने सोचना बंद कर दिया है एज अ इंसान, जो हमको कुरान बार बार कह रहा है कि सोचो सोचो समझो। तो वो जो बात आपने शुरू में कही थी कि उसके अंदर एक बात जो थी कि जो शुरू का वक्त था, और जिस तरह हम डिफाइन करते हैं कि बिग बैंग के बाद क्या हुआ, फर्स्ट माइक्रो सेकेंड्स तक का हमें मालूम है, और मे बी उससे भी थोड़ा सा पहले का भी कि क्या हो रहा था। लेकिन अगर आप वो जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पास आउट के बाद जब एक सस्टेनेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है अर्थ के ऊपर, आप क्या समझते हैं कि जो हमने चाहे वो टेलीस्कोप्स जो हमने भेजे हुए हैं ऊपर स्पेस के अंदर, या जो हाई हाई स्पीड कोलाइडर्स के साथ जो हम काम एक्सप्लोरेशन के साथ जो काम कर रहे हैं, एक्सलेटर के साथ, आप क्या समझते हैं कि इन दोनों की कॉम्बिनेशन, कोई कोई ऐसी रिसर्च हो रही है जो कि इन दोनों चीजों को कंबाइन करने की कोशिश कर रही है? कंबाइन करने की कोशिश तो नहीं हो रही है, लेकिन जब डेटा आता है तो फील्ड्स के दोनों साइड, you know, people on both sides of the experts on both sides of the field, they look at it, and one affirms, the other one confirms.
one proposes, the other one suggests this might be that phenomena. So it's always like nobody is perfect, nobody knows everything. टू द एक्सटेंट कि अगर यहाँ पे मैं कुछ प्रपोज करूँ कि भाई मैंने इस तरह किया है, मेरा एक्सपेरिमेंट है, एंड यू से ओके let me go investigate that, and then you can come back, as you know, okay, you can raise other questions. Maybe you can confirm what I did, what I claimed, and then you go one step beyond that and say, aha, I also see this if I do this, which is a very common practice in high energy physics. कि आप वो phenomena repeat कर सकते हैं कि नहीं. If you cannot repeat that error, then that error is a fluke. एक और सवाल जो पर्सनल भेजा है किसी ने, अच्छा, ये कह रहे हैं कि इंटरेस्टिंग, ये कह रहे हैं कि ये मालूम करने की जुस्तजू क्यों हो रही है, why are we so curious to find and invest millions of dollars on finding out what happened at the time of Big Bang, why it is so important to us as a human being. तो इस सवाल को एक साइड पे रखते हैं और देखें कि ये जो रिसर्च हुई है इस एरिया में, उसके क्या क्या फ़ायदे हुए हैं. सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें मटेरियल साइंस डेवलप हुई है थ्रू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स इन एनी स्ट्रक्चर. अगर गोल्ड बना है तो गोल्ड तो बेइंतहा है दुनिया में, फॉर एग्जांपल, लेकिन ये बिट्स एंड पीसेस में है. इट्स अ हैवी मेटल. It's on the other side of the periodic table. So what happened? जब चीज़ें इतनी गर्म थी some 500,000 years ago, तो heavier things and denser things will go sink, if you will. And so that's the very fundamental thing. So you need to understand what is it in that metal that it sinks. Then you want to see the structure. Once you understand the structure, then you say, aha, let's see what's beyond that. And so it's एक जुस्तजू रहती है इंसान को. और आप अपना मटेरियल कोई भी देख लें, I can give you many examples. जिस तरह आपके फ़ोन में जो crystals लगे हुए हैं, at one time we did not understand the full potential and use of crystals. तो जो screens हैं, that's really crystal. Or this came about in 90s, not prior to that. Cell phone की example है कि cell phone late 90s में it used to be a heavy piece of equipment जिसको आप was several pounds in some cases. और आज देख लें कि आपके सेल फोन में जो प्रोसेसर्स लगे हुए हैं उनकी कैपेबिलिटी, एंड आई शो यू स्लाइड, कि जो पहला क्रेक कंप्यूटर था, सुपर कंप्यूटर, which we used to crunch our data in 1984, 83, 82, that weighed about 5.5 tons, 5,500 pounds, or it was about 6 feet tall, or it could barely do 240 million instructions per second. That's it. आज जो है आपका cell phone is 100 times more powerful than that. All this happened because we were able to unlock the secrets of materials. यही बात जो है ना, ये कि एक चीज जो हम फिजिक्स के अंदर देखते हैं कि वो इतनी ब्रॉडर एरियाज में काम कर रही है. चाहे एक जगह हम कह दें कि हीट ट्रांसफर के अंदर वो वेव थ्योरीज की बात कर रही है या पार्टिकल्स की बात कर रही है, तो मटेरियल्स के अंदर आ गए हैं हम, कि लोगों को ये समझने में मुश्किल होती है कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ और कैसे कैसे है. आपके पास आपको कोई और सवाल तो मेरे पास यहाँ पे नहीं आया है अभी, तो आप अगर कंटिन्यू करना चाहें तो प्लीज गो अहेड. तो आपको मेरी स्लाइड्स नजर आ रही हैं अभी? जी जी बिल्कुल नजर आ रही हैं. ओके, तो लेट्स गो टू जो नील डिग्रास ने बात की थी टेम्परेचर्स की. तो जस्ट टू सेट स्केल हियर एंड अ रिमाइंडर, तो यहाँ पे 10 degrees K is this, 5 is 3 K is here.
270 degrees C. And you, in order to make it a superconducting fluid, you stay below 4.2 degrees Kelvin and about 1.8 degrees Kelvin. 1.8 पे डीजल आपको पता है किस तरह का लगता है, right? It's sludgy fluid. Helium flows at that temperature around like a slush, like a sludge. So it becomes that thick. Or this cloud that you see is at that minus 273 degrees C, which is really a super fluid, if you will. Now, why did I mention that? It's important कि आप ये देखें किसी भी superconducting magnet के, these are the parts. And और मैं आपको एक मेरे पास sample भी मौजूद है that I'll show you. Or how do we build this? These are the superconducting leads, two of them, one, another one. This is a big iron yoke. This aperture is about 5 centimeters. About 5 centimeters. Large Hadron Collider is about, I think, 7 centimeters, if I'm not wrong. और हर magnet जो है वो of course has poles, north and south. अगर आपके दो poles हैं north and south, तो we call it dipole. If you have 4 poles, north south and north south, we call it quadrupole. And we make use of both types of magnets. So what I'm going to do is maybe share. Okay, आपको कैमरे में कुछ नजर आ रहा है? मेरे हाथ में क्या है? एक मिनट जरा, मैं इसको एक मिनट आपकी प्रोफाइल को मैं उस पे ले आऊं, स्पॉटलाइट्स के ऊपर पिन कर दूं। जी अच्छा, ये जो है, this is जो आपने लंबी सी रॉड देखी with a golden front, so this is a cookie, we call it cookie. और ये cookie, imagine this कि you have umpteen of these cookies, and this makes that long magnet. Usually it's about 60 feet in length, जो कि superconducting supercollider में था, and we would have used 10,000 such magnets. So you can imagine कि it's a monumental project, और इसके अंदर आपको material science की scientists की ज़रूरत है, इसके अंदर mechanical engineers की ज़रूरत है, electrical engineers की, and a physicist to design the magnets. And that's the kind of thing. So this is a dipole, one pole and another pole. What is the purpose of a dipole and a quadrupole? The particle beam अंदर से गुजरती है, जो कि आपने leads देखी. One comes out of this side, one comes out of the other, one comes out of this side. And the particle beam गुजर रही है, whether it's proton or electron, the magnetic field of 6.7 Tesla and above, or 15 Tesla deploy anywhere, but operating at about 11 Tesla. This is how you control the beam. Or eventually, after a certain distance, just like the laser light, beam starts spreading. So what you do is, every so often, you would put quadrupole magnets, and they will quadrupole, 2 poles from on horizontal axis and 2 vertical axis. They will compress it based on your design, and then try to focus that beam again. And that's why we call it lenses, because that's what you do. You take lens and you focus the light so you can see exactly where you're going and what you'll see, what it gives you. So every so often, in your ring, after dipoles, you will have quadrupoles, and they will focus the beam. You can flatten the beam by compressing it using high magnetic fields, or you can make them rounder, or you can make them vertical, depending on your needs. आपने एक स्लाइड के अंदर
क्रे कंप्यूटर्स की बात करी थी। जी जी। अच्छी तरह याद है कि जब हम यहाँ पे आया था, मैं 89 के अंदर, तो उस जमाने में क्रे जो था वह भी हाई एंड कंप्यूटिंग थी, बड़ी मुश्किल होती थी उससे उसका टाइम लेकर उस पर कंप्यूटर कुछ कोई चीज़ भेजने में। और हम FEA के कुछ एप्लीकेशंस को भेजा करते थे फोर्ड मोटर कंपनी के थ्रू। तो अब हम बात कर रहे हैं ज़्यादातर सुपर कंप्यूटर्स की या क्वांटम कंप्यूटर्स की। तो आप क्या समझते हैं कि सुपर कंप्यूटर या क्वांटम कंप्यूटर्स, जिनमें से कौन सी चीज़ आप समझते हैं कि हम नेक्स्ट 5 to 10 years में हमारे हाथ के अंदर कोई ना कोई लोगों के पास खरीदने के मौके होंगे उसके, या नहीं होंगे बिल्कुल? सो नहीं नहीं होंगे। लेट मी शेयर दिस देन। ओके। अब आपने ये बात कर दी है तो हाँ, ये मेमोरी वॉल देख रहे हैं आप। जी सो बिल्कुल। एवरीथिंग रियली जो ये आप देख रहे हैं फॉर लास्ट 6-7 decades से ये हो रहा है कि about 20 to 25% इंक्रीज हो रहा है इन CPU स्पीड्स annually. And DRAM speed also, is about 10-11% or so. ये सारी चीज़ें इस चीज़ की मरहून मिन्नत है कि आपका प्रोसेसर की स्पीड क्या है। दिस इज़ दैट स्लाइड जो आपको बताती है और अप्रॉक्सीमेशन देती है कि इतने अगर सालों में हमने ये प्रोग्रेस की है। देयर वाज अ पीरियड जब इन 80s और लेट 80s से अर्ली 90s तक you would get 52% a year increase in CPU power and processing power. उसके बाद ये बात reduced to 20% इस regime में बात mid 90s से अभी तक 2000s तक. Now we are going beyond that. So if you extrapolate that using just statistical methods, what you will see is that in about 10 years, you will be somewhere about here, which is over 15,000, if you will, of VAX's capabilities. So that's just amazing to say the least. और ये सारे किस वजह से हुई है कि मटेरियल साइंसेस में इतनी डेवलपमेंट हुई है कि it's mind boggling. See if I can find that slide. Yeah. So ये multi core processors हैं, if you will. This is you all know the multi-threading process. So one is multi-threading that you will do at the software level. The other one is you will do that at the hardware level. So hardware level में भी इतनी progress हो रही है कि even if you don't jump to quantum computing, this in itself is going to come closer to that breakthrough boundaries. यही बात जो थी ना, आपने जो अभी बताई है ना कि ये कंप्यूटिंग पावर्स की। तो जी जी। अभी मैं कहीं थोड़े दिन पहले पढ़ रहा था कि वो जो IBM का जो है कंप्यूटर, ऑस्प्रे ओस्प्रे के नाम से, हाँ, तो वो 433 और 450 के करीब क्यूबिट्स कैलकुलेशन कर रहा है। लेकिन वो क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर है। और जो हमारे पास रेगुलर सुपर कंप्यूटर्स में, मेरा ख्याल है हम लोग अभी तक 200 तक ही पहुंच सके हैं, 200। लेकिन क्वाड्रिलियम के अंदर तो हम देख रहे हैं कि ये चीज़ फिजिक्स के, या आप जैसे आपने कहा कि जो मटेरियल साइंसेस के एडवांसमेंट के अंदर ही आई है। और अभी भी जो कूलिंग टेक्निक्स हम जो आजकल के जो प्रोसेसर में यूज करते हैं, NVIDIA का जो नया सिस्टम आया है उसके अंदर भी हमने कभी देखा कि उसकी पावर जो AI के साथ उन्होंने लगाई है, तो दैट इज आल्सो इनक्रेडिबल।
मुझे सही याद नहीं, परसों मेरा एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा था उसका लिंक कि लेस देन $3,000 के अंदर जो एआई का जो नया प्रोसेसर इन्होंने डिजाइन करके, आई थिंक दे आर गोइंग टू लॉन्च द कंप्यूटर इन सॉरी मार्च, निवेदन किया। तो वो भी वही हमारे लिए एक बहुत ही अब आगे के लिए हम सब जब सोचते हैं कि हाउ विल वी गोइंग टू यूज दीज थिंग्स इन एआई। आई थिंक इन बच्चों के लिए तो it will be a fun thing to be a part of that time when they will be able to use these things. हम तो सिर्फ हाँ, सोचते उसके रहते हैं। लिए what I would suggest is कि मैं देखूंगा, मैं अगर लिंक मुझे मिल गया तो वो भी शेयर करूंगा। लॉरेंस बर्कले नेशनल लैब, इनकी Yes, दो Lawrence लैब्स Berkeley. हैं, एक Yep. लॉरेंस लिवरमोर है और एक लॉरेंस बर्कले लैब। मैंने लॉरेंस बर्कले लैब में काम किया, तो दे हैव अ हाई एंड मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग कंप्यूटिंग डिवीजन। और सिएरा आई थिंक वहाँ पे है, लिवर उसके अंदर लिवरमोर में। लिवरमोर में है वो जी। तो वहाँ पे मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त भी मेरे साथ काम करता था, लूशन, वो ही वर्क्स देयर। तो दे हैव मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन दिस फील्ड, और उसकी वजह ये कि उनके पास डिफेंस बजट आता है। लॉरेंस लिवरमोर में डिफेंस बजट आता है, जबकि एलबीएल जो लॉरेंस बर्कले लैब, लॉरेंस बर्कले यूनिवर्सिटी में, उनके पास डिफेंस बजट नहीं आता, तो इसलिए उनका काम इतना तेज़ी से नहीं बढ़ता। बट दे हैव मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। इसी तरह से JPL है, जेट प्रोपल्शन लैब, दे हैव डन सम ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस इन्हीं चीज़ों में। तो या you will see, I think कि अगर किसी भी स्टूडेंट ने जो पाकिस्तान से आता है, if you get into a good university, the trick is कि you always look for a professor जिसका काम credible हो, जो कि recognition हो, and see if he or she can pick you up as a student. And you don't have to be asking for anything except I want to work for you, I want to work with you, I want to learn from you. And that is what a faculty member is looking for. बहुत अच्छी बात करी आपने ये वाली कि हम हर बच्चे से जब मैं बात करता हूँ कि क्या मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी, क्या मुझे ये मिल जाएगा, या मुझे ये तो बात की बात है, पहले ये बताएं व्हाट आर यू गोइंग टू डू। Exactly. ये समझ में नहीं आती बच्चों को ये वाली बात। हाँ कि तो once you आपने show तो them what you have to offer, तो फिर बात आगे बढ़ सकती है। आगे बढ़ती है। और कोई किसी को सवाल है तो अपना अनम्यूट करके आप लोग अब खुद डायरेक्ट सवाल कर लें ताकि मुझे ये आसानी हो जाए। तो बस मैं 2-4 हाँ श्योर, स्लाइड्स और वापस तस्वीरें मैं दिखाऊंगा वापस मैं। जा रहा हूँ आपकी स्लाइड के ऊपर। जी, तो मैं दो चार जो है वो बस स्लाइड्स दिखाऊंगा रंग बिरंगी, ताकि लोग खुश हो जाएं मेरी बाकी बातों को, गलतियों को भूल जाएं और ये देख के खुश हो जाएं, तो एंजॉय करें। तो मैं दिखाता हूँ ये। अच्छा, तो मैंने आपको लास्ट स्लाइड ये दिखाई थी मैग्नेट की, इज दैट जी राइट? जी अब ये देखें, ये फर्मी नेशनल लैब है जो कि 67-69 में बनी थी, और बॉब विल्सन इसके फर्स्ट फिजिसिस्ट और डायरेक्टर थे, और उन्होंने 100+ मिलियन, 120-130 मिलियन डॉलर्स वापस कर दिए कि जी हमारा काम हो गया है, अब ये आप पैसे आपने ज़्यादा दिए, ले लें वापस। इमेजिन दैट हाउ ऑनेस्ट ही वाज। एंड अब ऐसे लोग शायद शायद ही मिले। अब कहीं भी नहीं मिलेंगे ऐसे लोग भाई, मैं बता सकता हूँ, मेरा तो अंदाजा होता है रोजाना। ये है एक सेकंड मैं कुछ ढूंढ रहा श्योर हूँ। श्योर। ओके, आप कैमरे में मैं कुछ दिखा रहा हूँ, आपको नजर आ रहा है ये कि हाँ नहीं? मैं एक ओके, मिनट मैं ये स्क्रॉल कर लियोन रहा हूँ आपकी लेटरमैन है स्लाइड ये। के ऊपर। जी हाँ, एक मिनट। जी ये नजर आई आपको तस्वीर? इधर किताब में जी दिखा जी रहा हूँ एक आपको। इस पे नजर ये आ रही है। तस्वीर है लियोन लेटरमैन की, और उसका टाइटल है ये द गॉड पार्टिकल, जो कि इन्होंने लिखी थी बैक इन द 80s, और ही वाज माय फर्स्ट डायरेक्टर एट फर्मी नेशनल लैब।
about less than 220 physicists. तो हम लोगों का बड़ा क्लोज इंटरेक्शन रहता था. इस तस्वीर में ही इज टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स. और then there came a time I was very fortunate कि जहाँ पे ये खड़े हैं यहाँ पे मैं खड़ा था और यहाँ पे ये बैठे थे. And I was presenting the results of my design, research, and progress we had made on superconducting magnets for superconducting super collider. And that was a very momentous time in the sense that 11 labs made across the world, magnet design was being developed. लेकिन जिस टीम ने जीता था award, that was at Fermi National Lab that I was part of. And we were four physicists, 5 physicists. 4 were active physicists and 1 was, project manager, Paul Manch. और हमें 6 साल लगे थे उसको develop करने में. And then that design was further improved and developed. And then we trained physicists from LHC, Large Hadron Collider, from CERN. और उन्होंने हमारे डिज़ाइन को जो कि सिंगल एपर्चर था उन्होंने उसे लेकर के तो डबल एपर्चर बना दिया. Now in 17.5 miles circumference at LHC at CERN, they are able to collide the beams and then get the interaction जो मेरी शर्ट के ऊपर मैंने आपको दिखाया. Leon Lederman, another point to be noted is that Leon Lederman got his Nobel Prize and everything, like he died 2-3 years ago. About 4 years ago in 20, I think. He was seriously ill. He did not have money to pay for his medical bills. He had to sell his Nobel Prize, the medal itself, and raise money to pay his medical bills. Irony, shame, disrespect, all of those things combined together. So that can happen. दुनिया में आपने कुछ भी किया हो लेकिन आपको पता नहीं होता है कि कल के दिन आप you will get support from your government or your fellow scientists or fellow जो भी आपके फील्ड के लोग हों. It's nobody knows the future really. हम लोग बात कर रहे हैं इधर फिजिक्स की, पार्टिकल्स की, but this is a human tragedy in that sense. ये इस Fermi National Lab में, this is the injector ring as we call it. Sorry, this is the injector ring that goes into this primary ring, और यहाँ पे it picks up the speed. Proton would pick up the speed and then go into the bigger ring. और ये ring is about 3.9 miles in circumference. I used to run around this ring with my other buddies and stuff at that time. और ये जो lines देख रहे हैं, this is what goes to solid target. यहाँ पे ये interaction regions हैं इनके 2, एक नज़र नहीं आ रहा इधर, एक इधर है, लेकिन ये particle beams are sent here, and many other regions. वहाँ पे जो आपका solid target experiments होते हैं. तो मेरा जो था वो solid target experiment था, और Large Hadron Collider was put in there. जो कि मैंने उस पे काम करना शुरू किया था when I was a sophomore in undergrad at University of Oklahoma. Just to show you as a comparison, ये CERN का ring है, LHC, Large Hadron Collider, और इनके जो काफ़ी सारे इनके मेरे ख्याल 7 इनके colliding interaction regions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So that's how typically particle accelerators with higher energies are built. Okay, you have a booster ring, then it goes into a secondary ring, and then it goes into tertiary, and then it goes into the main ring, and this being the main ring. By the way, the students, there is a very good video on the documentary rather on how the Higgs boson was discovered. और कौन सा process था जिसके सामने रख के, so it was a lengthy documentary.
तो स्टेज वाइज उन्होंने बताया उसके बारे में कि किस किस वक्त क्या क्या हो रहा था। हाँ, मैं आपको कुछ लिंक्स भेजूंगा, उसमें ऐसे भी आपको मिलेंगे. डिफरेंट साइंटिस्ट हैव डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्लेनिंग, लेकिन it really takes a very articulate person to water it down ताकि लोग आम आदमी समझ सके. Some people have done an incredible job of doing that. ये जो है ये मेरा जो सुपर कंडक्टिंग सुपर कोलाइडर पे, let me give you a couple of quick spiel on what I did, what my contribution was, if you will. तो मेरी जितनी भी publications हैं, आपने लिस्ट वगैरह देखी होगी, most of those are refereed papers. And for the benefit of those who don't fully understand what refereed papers really mean, is that people who are working, who are your peers, who are working in the same field as you are, and have the expertise or have established themselves as credible expert in that field, they review your paper. That means if you are 5 years into that field, have been working for about 5 years or so, then people who are reviewing your paper are probably 15, 20, 30 years of experience. And they look at everything. They make sure that your I's are dotted and T's are crossed. And then they allow that approve that paper to be published. And that's the credibility that your work brings to you. And without hard work, without long hours, without burning midnight oil, you cannot do it. So ये जो है ये this tunnel has this magnet that goes across. So my contribution was we created, along with two other physicists, we created a 1/10 model of the superconducting supercollider, like a prototype, if you will. And we made it, I think, close to 3 years, and we showed the proof of principle that how supercollider will work, and we published several papers on that. President George Bush I came to see our facility, or that helped gain more funding, of course. So this is what it is. So I worked on the prototyping of the large 10,000 magnet long superconducting supercollider, and did the proof of principle, and papers were published that CERN used as the yardstick to develop their supercollider. Awesome. This is a cutout of their double apertures superconducting magnets. जो मैंने आपको भी cookie दिखाई थी, that was just one aperture, if you will, or one magnet. यहाँ पे you can see that this is one magnet. This cookie, somewhat not very focused, but it looks similar to what I showed you. And there's another magnet here, and matter, antimatter, they travel in clockwise and anti-clockwise direction, and then they collide in the interaction region. And what you see is a shower of interaction that comes out, that's similar to what I showed you on my black shirt, right? Yep. So that completes the story. So this is the tunnel. जो हम लोगों ने 21 miles की tunnel खोदी थी, and the land or the bedrock was about 400 feet deep on one end and 200 feet deep on the other end. So that's how it was set up. You build your accelerators on a rock bed कि अगर ज़लज़ला वगैरह आए तो पूरी rock bed हिले और आप
ये ना हो कि एक पीस इधर टूट के गिरा है तो आपका पूरा एक्सेलरेटर ही टूट जाएगा. So that's very extensive geological studies are done before site is chosen. So this is the mouth of that tunnel. जहाँ से अभी आपको दिखाऊंगा entrance होती है ये. तो मेरी lab जो थी was about 200 feet from the mouth of this tunnel. Wow. And this is what inside the tunnel. So you can see the size, relative size compared to a couple of people working in there. Here's another one. This is called the mold, if you will. ये जो है वो टनल बनाने की मशीन है. और टनल बनाने की जितनी भी मशीन्स होती हैं वो डिज़ाइन स्पेक्स के हिसाब से बनाई जाती हैं फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. ये नहीं है कि मैंने आज ये यूज़ की इस टनल में अब निकाल के दूसरी टनल कहीं और खोद दूँ मैं. It doesn't work that way because once you have you're done using it, then you typically in large projects you bury it. You create another tunnel on the side and you bury that machine there. That's it. That's the end of that life of that machine. So end of life यहाँ पे होती है इसकी. This is another view of my experiment, which was called ASST, accelerator string test. So 10,000 magnets, we took 1/10 of that model, and then we created this string test. So it was a small string of the entire machine that was used as a prototype. So I think this is what I like. This is where I like to stop, and just to I guess if you have any questions, please feel free to ask. I'll try to answer. If not, then I'll try to find you a reference where you can go and actually do your own reading and search. थैंक यू तारिक साहब, ये बड़ा इंफॉर्मेटिव था और मेरा ख्याल है उन लोगों के लिए जो कि फिजिक्स और साइंस से इंटरेस्ट रखते हो उनके लिए तो एक मैं कहूँगा वारे न्यारे हो गए आज उन लोगों के. जो जो बात मुझे आपकी पूरी गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा एक्साइट की वो ये नहीं कि क्या काम किया गया, कहाँ काम किया गया, वो ये थी कि कितनी मेहनत की गई और उस मेहनत के साथ आपने अपना जो वक्त वहाँ पे लगाया है, चाहे वो आप अंडरग्रेड कर रहे हो उस वक्त या फिर आपने मास्टर्स कर रहे हो या फिर आप काम कर रहे हो. तो एक छोटा सा मैं फिर कहूँगा एक दफ़ा फिर रिमाइंडर करा दें बच्चों को कि ये तमाम चीज़ें जो होती हैं इसके लिए मेहनत, जस्तजू, लगन, ये किस तरह रोल प्ले करती है सक्सेस के अंदर. तो सवाल really का जवाब वो एक ही है, and that is कि somehow you develop the sense of and the value you see in whatever you are working. So मेरे साथ ये था कि मेरा प्रोफेसर, I saw him 3 साल मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं की. For 3 years I worked every day. I was in my lab. I was traveling for my lab work, or I was reading something and doing something, presenting, teaching class, whatever was assigned to me at that time or whatever was needed. Or as part of the education and training, I was constantly giving work seminars at least once a month on my campus. कि मैं कर क्या रहा हूँ lab पे. So all these things, I wouldn't say that I had to pay the cost. It's just that I had to be there. Presence counts a lot. मेरा जो घर था वो कैंपस समझे, मेरा फिजिक्स डिपार्टमेंट और उसके बाद उससे 100 फुट के
पर जो है वो स्ट्रीट थी, स्ट्रीट क्रॉस करें तो हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस का हॉस्पिटल था, और हॉस्पिटल के पीछे एक गली क्रॉस करें तो मेरा घर था जिसमें मैं रहता था. इट वाज अ रूमिंग हाउस विद 4-5 अदर पीपल, और मेरा सेकंड फ्लोर पे मेरा कमरा था, वहाँ से मैं अपनी लैब की लाइट देख सकता था. और मेरा प्रोफेसर क्रिसमस के दिन काम करता था, तो आई नेवर हैड एन एक्सक्यूज नॉट टू वर्क ऑन क्रिसमस डे. तो और अगर वो सुबह 3 बजे वो आया तो मैं भी तैयार हो जाता था कि अगर कॉल आई तो आई शुड बी रेडी टू गो. एंड टिपिकली माय स्केड्यूल वुड बी, मेरे साथ interesting thing is that there are 14 students that were picked or had applied for scholarships and fellowships. तो उनमें से सिर्फ 4 जो है वो उस प्रोग्राम के अंदर रहे, बाकी वो निकल गए इधर उधर से. कुछ जो जो कॉकेशियन थे उन्होंने तो ये भी कहा कि भाई यू पे टू लिटिल, so they would go ahead and get student loan. So that's a change or a difference in our attitude. मेरे साथ एक था टॉम थियल, एक एंथनी ऑलरिच, और एक बो चैन. वो बो चैन was from Taiwan, and Tom Thiel and Anthony Aldrich were from Tulsa, Oklahoma, और मैं देसी आदमी. तो मेरी लैब जो थी उसमें एंथनी ऑलरिच शेयर्ड लैब विद मी, और वही हमारा ऑफिस था, वही हमारी स्टडी प्लेस थी. डिपार्टमेंट वुड as an undergrad, department gave us the key to our library. We had 24/7 access. We had access to photocopiers, as we call them, Xerox machines, and to everything they made it available to us. Another thing was कि मैं तो foreign student था, तो जब मुझे उन्होंने scholarship दी and they converted that into fellowship, तो मेरी 75% tuition was waived. And so I could see the benefit, tangible benefits coming to me, so I had no reason to slack off. तो बहुत सारी motivations होती हैं. I'll even tell you how much money I was getting. I was getting $325 a month. $169 मेरा apartment का किराया होता था, and another $70 for my food, meal tickets in the cafeteria, and I would be left with like $40 or $50 a month in my pocket. I had a car that I would drive once or twice a month. That's it. एक और लास्ट सवाल चलें, इसको लेते हैं कि ये सक्सेस और फेलियर होता है हर काम के अंदर. फेलियर को आप बताएंगे कि हमें किस तरह लेना चाहिए जब हम फेलियर से गुजर रहे हों. हमने इतनी मेहनत करी और इवेंचुअलिटी के अंदर वो हुआ कि वो चीज़ कामयाब नहीं हुई, जो हम करना चाह रहे थे, जो चीज़ प्रूव करना चाह रहे थे वो प्रूव नहीं हुई. तो आजकल के बच्चों को ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जी मैंने तो इतनी मेहनत करी, मुझे कुछ मिला ही नहीं. I think everything is a success, to be honest with you, because life is trial and error. माँ के पेट से तो हम सब कुछ सीख कर नहीं निकलते हैं, आस्ता आस्ता ही सीखते हैं, और अपॉर्चुनिटीज जो नजर आए तो मेक द बेस्ट यूज ऑफ दैट, and that will define if you have taken if you have availed the opportunity, then something positive will come out of that. But if you have missed the opportunity like other 10 people did, जिनका मैंने बताया कि Caucasian students said we will take the student loan instead of working for this your lab, because उस वक्त lab would pay you $2 an hour, official rate, and they would ask you to work for 15 hours minimum, और उसके बाद तो फिर आपका चूंकि अपना project है, so you end up putting in more hours. तो हम जो 4 लोगों का मैंने आपको जिक्र किया, हमें कोई हेजिटेशन नहीं थी ज़्यादा टाइम लगाने में, बाकी लोगों को हेजिटेशन थी. So the opportunity did come to them. They did not avail it. We availed it. तो हमारे लिए सक्सेस हो गया, उनके लिए सक्सेस नहीं हुआ. बल्कि मेरा दोस्त Tom Thiel, he died of cancer. And so just imagine
imagine the connection that you develop with your faculty members. Dr. George Kalflesh, very well-known scientist in his high energy physics, वो टल्सा वहां से 150 मील दूर ड्राइव करके जाता था जब इसकी रेडिएशन थेरेपी होती थी, and he would do the calculation himself and talk to the doctors and consult with them. So you do garner your relationships this way. Tom Thiel had been out of school for 2 years, लेकिन जब जॉर्ज कार्लफ्लेश को पता लगा ये बीमार है और रेडिएशन है और थेरेपी इसकी होनी है, उस वक्त वो टॉम थील वाज इन सियाटल, तो उसने कहा तुम वापस आ जाओ यहाँ अपने माँ बाप के पास ठहरो रहो टल्सा में, एंड ही केम एंड देन जॉर्ज वुड गो देयर once a month जब उसकी रेडिएशन थेरेपी होती थी. So I mean, I would cherish that kind of relationship. मेरा advisor is still living और मेरी उससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी relationship है. जब भी वो डैलस आते थे तो he would visit me and at times he would stay at my place. So these are the values that you garner. बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कही. वैसे अभी भी सिचुएशन एकेडमिक्स में नहीं बदली है. जो आपने बयान करी है अपनी वाली वक्त की, वो अभी भी नहीं बदली है. बहुत कम, लेकिन अब तो ये भी होने लगा है कि जो बाहर से आते हैं स्टूडेंट्स, उनको भी सिखा दिया जाता है कि भाई इतना टाइम है तुम्हारे पास, तुम इतना एक्स्ट्रा टाइम क्यों लगा रहे हो. यानी कि आप अंदाजा लगाए, रिसर्च के अंदर वो कह रहा है कि मुझे तो 20 आवर्स के लिए रखा है रिसर्च के लिए, तो मैं 20 आवर्स ही करूंगा. यानी कि एक समझ से बाहर वाली बात है कि भाई ये तुम्हारा काम है, तुम ये देखोगे तुम्हारा काम कितनी देर में होगा. तो ये तो खुशी की बात है कि कुछ काम के तुमको पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन असल काम तुम्हारा है. तो ये एक है टेंडेंसी हम लोगों के अंदर थोड़ी सी. और मेरा ख्याल है जो अब मैं जो डिटोरिएशन देखता हूँ एजुकेशन के अंदर और खासतौर पर रिसर्च के अंदर, जैसे आपने कहा कि रिसर्च तो पब्लिकेशंस तो बहुत है, लेकिन अगर आप उसको देखें, पढ़ पढ़ के देखें, तो उसके अंदर कोई चीज़ नई नहीं है. सब चीज़ें हो चुकी हैं और उसको आपने दूसरे तरीके से पेश कर दिया गया है. तो बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब. It was a really honor for us to listen to you and listen to your struggle as well as the success you have. हमें बहुत खुशी हुई है कि मैं फिर आपका शुक्रिया अदा करूंगा एक दफ़ा ऑन बिहाफ ऑफ एनईडी स्कॉलर्स एंड डायरेक्टर्स. यहाँ पे हमारे पास खुरम फैयाज मौजूद हैं, अंजुम शरीफ भी मौजूद हैं जो कि कराची में होते हैं. खुरम जो हैं ये भी हमारे एडवाइजर्स हैं, ये कनाडा में होते हैं. So on behalf of all of us, thank you for all your support from your foundation that really helped us out this year. आपको पता नहीं कि ये जो बच्चे हैं इनकी कितनी ख्वाहिशें होती हैं और इनकी कितनी चीज़ें करने चाहते हैं, लेकिन बात यह है कि जब तक हम सीखेंगे नहीं इस तरह की बैठकों से, कि हमारे साथ जो आए हैं, और ये मैं सब स्टूडेंट्स से कह रहा हूँ इस वक्त, कि आप ये देखें कि जो लोग हमारे साथ आते हैं और ये बातचीत करते हैं आप लोगों से, वो अपना टाइम निकाल के आते हैं, अपना टाइम निकाल के फिर आपसे अपना शेयर करते हैं एक्सपीरियंस को. पुराने ज़माने के अंदर दैट वाज द वन वे. जो स्कॉलर्स होते थे वो बैठते थे और वो गुफ्तगू करा करते थे और उससे सीखते थे उनके शागिर्द. ये एक बड़ा यूनिक वो है, जैसे तारिक साहब बता रहे थे कि एक कनेक्शन होता है एडवाइजर्स के दरमियान और एडवाइजी के दरमियान. और जिन लोगों ने वो देखा है, दे अंडरस्टैंड द बेनिफिट दे गॉट आउट ऑफ इट. थैंक यू अगेन, रियली अप्रिशिएट. आपसे आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई और इंशाल्लाह हम फिर एक महफिल रखेंगे और अब की दफ़ा बड़ी स्पेसिफिक अंदाज में एक पूरे टॉपिक के ऊपर डिटेल से बात करेंगे. इंशाल्लाह आई थैंक यू लुक जी. फॉरवर्ड टू दैट. तो आपकी बात में मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं क्विकली कि हमजा यूसुफ का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो वो जैतूना इंस्टीट्यूट चलाते, उन्होंने इस्टेब्लिश ही किया था. आपने बात की वन ऑन वन इंटरेक्शन विद योर मेंटोर, विद योर टीचर. ही वेंट बैक एंड फोर्थ टू मॉरिटानिया और वहाँ पे टेंट में रह करके जो इनके उस्ताद थे, जो आलिम थे, उन्होंने किताबें लिखी, पढ़ाया इनको. वन ऑन वन इंटरेक्शन था इनका.
and he is a Caucasian man who converted or reverted to Islam, and this is how he acquired the knowledge that आप उनकी बात सुने कोई भी, I mean, it has depth in it. Yep. So I think that remains the valuable relationship that brings you that knowledge जो उनसे आप लेते हैं अपने उस्तादों से. तो अल्हम्दुलिल्लाह. Okay, जज़ाकल्लाह खैर. Thank you very much.